I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear students, how are you? This video is about the elements of plot of a play. Plot is very important or the most important part of a play. Now, there are some important elements of a plot. प्लॉट के कुछ मेन एलिमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्लॉट इज एक्सपोजिशन. व्हाट इज एक्सपोजिशन? इन एक्सपोजिशन नॉर्मली बिगिनिंग ऑफ स्टोरी, एक कहानी की इब्तिदा बताई जाती है, एक प्ले की, एक ड्रामा की इब्तिदा बताई जाती है. हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू बिगिन, फर्दर बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, हु, व्हेन, वेयर, such things उसमें रिप्लाई की जाती है. who, when, where, what. So these are the things which are replied in exposition. For example, अगर हम फर्स्ट ईयर सिलेबस में प्रोग्रेस इज अवर प्ले, उसमें हम देखते हैं कि बिगिनिंग में क्या है. वी आर इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द कैरेक्टर्स, राइट? लाइक द मेन कैरेक्टर्स आर मिस मेल्डन एंड प्रोफेसर कोरी, एंड जो भी कहानी का आगाज़ है वो मालूम होता है कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, दैट प्रोफेसर कोरी इज जस्ट गोइंग टू inform the world or tell the world that he has made a very destructive formula which will expedite war. जैसे जंग तेज हो जाएगी, destruction तेज हो जाएगी. So this is the beginning of the story, introduction of the plot. On the other hand, जो सेकेंड ईयर में नॉवल है हमारे पास, लाइक लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, उसमें हम देखते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स एक आइलैंड पे पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, व्हाट इज द रीज़न, कहाँ से वो आए, एंड देन जो उनके मेन कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं. सो दैट इज एक्सपोजिशन ऑफ द नॉवल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज. सो एक्सपोजिशन इज द फर्स्ट स्टेप इन एन स्टोरी, प्लॉट और नॉवल. The next is rising action. Then story या कहानी या play या novel में main चीज़ क्या है? There should be some conflict. After exposition, the conflict rises. What is conflict or rising action? Struggle of main character. Struggle of main character opposing forces against opposing forces. कि जो main characters हैं, जो opposing forces हैं, उनके बीच स्ट्रगल है. जो हीरो है, हीरोइन प्रोटोगोनिस्ट, उसकी स्ट्रगल है अगेंस्ट एंटागोनिस्ट, राइट? जो विलन है, जो इवल कैरेक्टर है, उसके खिलाफ. तो बेसिकली कैरेक्टर की स्ट्रगल नहीं है, इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू थीम्स, टू पॉइंट ऑफ व्यूज. सो दैट इज कॉल्ड राइजिंग एक्शन, राइट? सो थीम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थीम. अपोजिंग फोर्सेज में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज रिलेटेड टू द थीम. ये हमें बता रहे हैं कि कहानी में थीम क्या है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मीन जो कैरेक्टर की इनर चीज़ें चल रही हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि वेदर ही शुड डू दैट थिंग और नॉट. लाइक इन हैमलेट, हैमलेट सेज टू बी और नॉट टू बी, इनर कॉन्फ्लिक्ट. सो सेम थिंग देयर द एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू द आउटर फोर्सेस against other characters, against the element of fate. So such things are outer conflicts or external conflicts. Again, अगर हम देखते हैं प्रोग्रेस में जो हमारा प्ले है फर्स्ट ईयर, उसमें क्या है कॉन्फ्लिक्ट? द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिसेस मेल्डन एंड प्रोफेसर कोरी. कोरी वांट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मिसेस मेल्डन डज नॉट. So this is a conflict. On the other hand, novel हम देखते हैं Lord of the Flies, conflict between the forces of Rolf and Jack. Rolf thinks कि हमारे प्रॉब्लम जो हैं वो रेस्क्यू होंगे with the help of knowledge. उनसे हम निजात हासिल करेंगे नॉलेज के जरिए. On the other hand, Jack is evil force. And he's saying that no, we just be something like selfish, having self-centered approach, and just
टू जस्ट बैली चेयर की तरफ हम इन्वॉल्व हों इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम नॉलेज, सो दैट एक बड़े पैमाने पर हम जो हमारे मेन मिसाइल हैं उनसे निजात ना हासिल कर सकें. सो द कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ रॉफ एंड द इविल एलिमेंट्स ऑफ जैक. So that is a rising action or conflict. Then I a climax. What is the climax? Climax is the peak of the conflict. Right, the turning point, the peak of the conflict, the turning point of suspense. Okay, so this is the suspense. जहाँ पर वो जो rising action में conflict था, उसकी इंतहा है, उसकी turning point है. That is called climax. For example, in the progress, the turning point when Miss Meldon is quite ready to do anything or to take any step to stop her brother Professor Corey from destruction or to destroy the world with the help of his destructive invention. Right? So that is the climax of progress. On the other hand, Lord of Flies में हम देखते हैं वहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन है. देयर आर सम पीपल दे थिंक दैट द किलिंग, द मर्डर ऑफ सिमन इज द राइजिंग पॉइंट, दैट इज द क्लाइमेक्स. एंड सम अदर थिंग्स दैट कि व्हेन जैक एंड रॉफ दोनों जो फोर्सेस हैं बिल्कुल सामने आ जाती हैं एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर. सो दैट इज the climax. So anyhow, so the climax is the turning point, the most important event in any story, in any play, and also in any novel. Next, the falling action. After this turning point, after this peak of the conflict, then there is a gradual decline. Rising action में gradual rise, and इसमें normally gradual decline. Rising action may take more time, but on the other hand, falling action में उस लेवल पर कर्व नहीं होगा. That will be bit sharp, कि तेजी से falling action जो है वो कवर अप होंगे. So conflict starts to resolve. So falling action में क्या conflict जो है after attaining climax, now conflict starts to resolve. Conflict resolve होने लगता है, solve होने लगता है. Some also think that it's also called anticlimax, कि climax के बाद ये start हो रहे हैं. It is also anticlimax. Tension is releasing. So यहाँ पर जो conflict की वजह से tension थी, that is towards decline और अब वो release हो रही है. This is the point when tension is releasing. Again आइए हम देखते हैं progress में what is the falling action. The falling action means when Miss Meldon is trying to kill her brother. So that is the killing of Professor Corey by his sister is the falling action. That is the falling action or anticlimax of progress. On the other hand, when we see the Lord of Flies, there is the falling action or anticlimax, or after the climax, the downward action is the main thing, the killing of Piggy. Right, so Piggy की killing हो रही है, that is, और जो बाकी remaining जो थे इसके comrades से लोग थे रॉफ के, when they join the side of the other character like Jack, so that is anticlimax or the falling action. Conflict or tension is releasing, and it is the place where conflict starts to resolve. The last step is a resolution, or it's also called denouement. D-E-N-O-U-E-M-E-N-T, denouement, or the conclusion. What does it mean? It means a final outcome of events or conflict. कि जो भी वहाँ इवेंट हुए हैं कहानी में, स्टोरी में, प्ले में, नॉवल में, उनके व्हाट इज द फाइनल आउटकम, व्हाट इज द फाइनल
थिंग कि उसमें जो हमारा ड्रामा है क्या है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन और डिनोमेंट, राइट, नो डिफरेंस, बोथ आर सेम. Again, see in the progress, in the following action, Miss Madden kills Corey, and the resolution may, no, she is talking to herself, and she is saying that she has taken the revenge of her son as well as her husband after or by killing her brother. So that is the resolution. Means ultimately we see that कि उसमें जो गुड फोर्सेस हैं वो विन कर गई, प्रोटोगोनिस्ट जो है ही विन्स और शी विन्स, कि जो भी कहानी का हीरो है, जो मेन करेक्टर है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इज विक्टोरियस. सो दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस. ऑन द अदर हैंड, इन लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में हम देखते हैं व्हाट इज द रेजोल्यूशन. एट द एंड वी सी दैट a naval officer reaches and he saves Rolf, when Rolf was very near to be killed by the evil forces, by the comrades of Jack. So at the time, he saved by the rescue forces. So ultimately, what is the resolution? कि हमें उसमें मालूम ही होता है कि अगेन जो रेस्क्यू पहुंचा उसी फायर की वजह से, मीन्स नॉलेज की वजह से, कि अल्टीमेट रेस्क्यू इज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज. So evil forces will ultimately be defeated. So although हम देखते हैं बॉल को इंट्रोड्यूस किया उसमें, पिगी लाइफ ओवर, सिमन्स लाइफ ओवर, बट एट द एंड वी कम टू नो दैट रेस्क्यू इज पॉसिबल ओनली थ्रू नॉलेज. सो जो पॉइंट ऑफ व्यू है रॉफ का और उसके फ्रेंड्स का, वो अल्टीमेटली वो पॉइंट ऑफ व्यू विन कर जाता है. So that is the resolution or denouement or conclusion of Lord of Flies. So dear friends, so these are the main 5 parts of a plot. So don't mingle the parts or the elements of a play with the elements or parts of a plot. Plot is itself a part of play, और part के आगे ये 5 main elements हैं: exposition, rising action, or conflict, climax, falling action, and then resolution or denouement. Thank you, dear friends.